आज के लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. Heart is one of the most important component of the circulatory system. It is the only pumping organ of the human body. So, let's talk about the origin and the structure of heart. Heart get originate from the mesoderm. That it is mesodermal in origin. Human heart is mesodermal in origin. Where it is located? What is the position? What is the location of the heart? Let's discuss about it. So the human heart is located in the center of thoracic cavity, just behind the sternum. Human heart is situated just in the center of thoracic cavity, or it is situated mid-ventrally in thoracic cavity in between the two lungs. Human heart is situated in the two lungs, in between the two lungs, and the place where the heart is situated in between the two lungs, that place is called as a mediastinum. Mediastinum is a space present between the two lungs. So the human heart is situated in between these two lungs. That's why the location is mediastinum. Now the shape of human heart. Human heart is conical in shape. It is highly muscular, conical, or you may say triangular. Why it is called as a conical or a triangular? Because human heart has a broader base. अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो base होगा वो broader होगा और इसका जो apex होगा वो narrower होता है. यानी ये जो होगा this is called as a base, whereas this side, the narrower side is called as a apex. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बना है ड्यू टू इवोल्यूशन. यानी अगर आप एम्फीबियन हार्ट देखते हो विच इज गेट इवॉल्व फ्रॉम द फिशेस, तो उनका जो हार्ट होता है टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, वेयर ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर लाइक दिस. लेकिन जब इवोल्यूशन होता है तो ये जो ऑरिकल्स है ये अपवर्ड आते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एंड होता है, इनका जो बेस होता है ये अपवर्ड मूवमेंट पर आ जाता है. और यहाँ पर हम देखते हैं तो ड्यू टू इवोल्यूशन ह्यूमन हार्ट हैज अ ब्रॉडर बेस विच सिचुएटेड सुपीरियर एट द पोजीशन. यानी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इनका जो ब्रॉडर साइड है वो ऊपर के साइड है और जो नैरोवर साइड है इट इज सिचुएट टुवर्ड्स द इंफीरियर पोजीशन. सो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो ये हमको रफली ट्रायंगुलर दिखाई देता है, या फिर आप इसको कोनिकल भी कह सकते हो. सो द shape of the human heart is conical or triangular, or it is highly muscular and hollow internally. The human heart is highly muscular and it is hollow from inside. The color of heart, it is reddish brown in color. अगर आप इसका कलर देखोगे, the color of human heart is reddish brown in color. Whereas the size of the human heart is one's closed fist. The size of the human heart is one's closed fist. और अगर इसके डायमेंशन देखते हैं, अगर हम इसका साइज को लेंथ मेजर करते हैं तो इनके जो मेजरमेंट होते हैं 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ. ह्यूमन हार्ट जो होते हैं उनका साइज आप देखोगे सो लेंथ होता है अराउंड 12 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ या थिकनेस जिसे आप कह सकते हो इट इज 9 सेंटीमीटर. वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, यहाँ पर थोड़े से वेरिएशंस आते हैं. देयर वेरिएशन फाउंड रिलेटेड टू द वेट ऑफ हार्ट. द ह्यूमन हार्ट वेरी इन केस ऑफ मेल और इन फीमेल. इन मेल द ह्यूमन हार्ट इज लिटिल हेवियर देन द फीमेल. सो in female the human heart it range from 230 gram to 280 gram. ह्यूमन फीमेल में इन हार्ट का जो वेट होता है वो रेंज करता है फ्रॉम 230 टू 280 ग्राम्स, या एवरेजली आप कह सकते हो कि 250 ग्राम वेट होता है फीमेल्स में ह्यूमन हार्ट का. प्लस इन केस ऑफ मेल में आप देखोगे तो इनका जो वेट होता है ये रेंज करेगा फ्रॉम 280 टू 340 ग्राम्स. इन केस ऑफ मेल द हार्ट इज लिटिल हेवियर देन female, so it range from 380 to 280 to 340 gram or averagely 300
300 ग्राम। तो अगर हम एवरेज वैल्यू देखेंगे इन सबको सम अप करके तो फीमेल में होता है 250 ग्राम इन वेट और मेल में होता है अराउंड 300 ग्राम। नाउ दिस ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। ये जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड दिस मेम्ब्रेन अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, अ डबल लेयर्ड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन इज पेरिकार्डियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट। अगर हम आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट को डिस्कस करते हैं तो हमको यहाँ पर इसके बाहरी हिस्से में मेम्ब्रेन्स दिखाई देते हैं। दो मेम्ब्रेन्स होते हैं एंड द टू मेम्ब्रेन्स out of the two the outermost is called as a pericardium and the inner is called as a heart wall. So first we talk about pericardium. So human heart is enclosed in the double layered peritoneum membrane called as a pericardium. This pericardium is the outermost membrane of the heart and this pericardium again divides into two layers. Again it differentiates into two layers. That the outer layer is called as a fibrous layer and the inner layer is called as a serous layer. Pericardium is a moist inelastic मस्कुलर मेम्ब्रेन। जो पेरिकार्डियम है वो हार्ट के बिल्कुल सबसे बाहरी हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। ये मॉइस्ट मेम्ब्रेन होते हैं, ये इनइलास्टिक मेम्ब्रेन होते हैं और ये मस्कुलर मेम्ब्रेन होते हैं एंड दिस मेम्ब्रेन अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स। पेरिकार्डियम को फिर से डिफरेंशिएट किया गया है इनटू टू मेम्ब्रेन्स। द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज fibrous membrane because it is made up of fibers, whereas the inner membrane is called as a serous membrane. जो इसका अंदर का membrane होता है that membrane is called as a serous membrane and that serous membrane again differentiate into two membranes. serous membrane जो है ये फिर से दो membrane में divide होते हैं and that membrane, that two membranes are parietal membrane and visceral membrane. Parietal membrane and visceral membrane. This parietal membrane is the outermost and the visceral is the inner one. So these are the two membranes who are the differentiation of serous membrane. So pericardium again differentiate into two layers, fibrous layer and serous layer. This serous layer again differentiate into two membranes, that is parietal membrane. The outer membrane is parietal membrane and the inner membrane is a visceral membrane. The fibrous membrane is made up of fibrous connective tissue and the serous membrane, both the membranes, the parietal and the visceral, both the membranes are made up of simple squamous epithelium. Now the next membrane is a heart wall. The next membrane of the heart is a heart wall. Heart wall made up of three layers. Human heart made up of three layers. The three layers are epicardium, myocardium and endocardium. These three membranes are called as a epicardium, myocardium and endocardium. The epicardium is outermost, myocardium is the middle layer and the innermost membrane is the endocardium. Out of the three, epicardium is the simple made up of a single layer of squamous epithelium, whereas the myocardium is made up of a specialized muscles called as a cardiac muscles. These are thickest wall in the heart and this myocardium, it maintains the rhythmicity of the heart because it is responsible for contraction and relaxation of the heart, who can maintain the rhythmicity, and due to the contraction and relaxation and due to its rhythmicity who can maintain by cardiac muscles, the heart is able to pump the blood. Now the next one, the innermost membrane is called as a endocardium. This endocardium is made up of single layer of सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम या आप कह सकते हो एंडोथीलियल सेल्स। ये स्क्वामस इपिथीलियम से बनते हैं या फिर उसी को और एक नाम दिया गया है, दैट इज एंडोथीलियल सेल्स. सो दीज आर द कवरिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. Human heart is enclosed by a two membrane. First
Pericardium, the second heart wall. Pericardium is made up of two membrane, fibrous and serous. It is made up of two membrane, fibrous and serous. Fibrous is made up of fiber connective tissue, whereas serous, again it differentiated into two layers. That two layers are parietal, who is outermost in the position, and the visceral is inner to parietal. And both these membranes are made up of simple squamous epithelium. Whereas the heart wall, again made up of three layers. Human heart encloses by three layers, and the three layers are epicardium, who is outer in position, myocardium, who is middle in position, and endocardium, who is inner in position. Where epicardium is made up of squamous epithelium, myocardium is made up of specialized cardiac muscles who can maintain rhythmicity of the heart, who stimulate heart to contract and relax. Whereas the innermost membrane is endometrium. This endometrium is made up of a single layer of squamous epithelium.